Oh, all right. I am sharing the screen. Okay. Yes, sir. All right. So let's. हाँ जी. Let's start discussing the questions and go one by one. ये topic wise बटे हुए हैं. Very nice questions as per me. अच्छा अच्छा समझाया हुआ है. Okay. और all right. Question number 1. Assertion है, reasoning assertion. ये करने हैं आपको सारे वैसे भी, ठीक है. ठीक। हाँ जी. तो आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है A, B, C. Read the statement 1 and read the statement 2. A. करेक्ट. यू नो दिस, हमने पढ़ा था थ्योरी में ये. हम्म. ठीक है. स्टेटमेंट नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2. लेंथ लेंथ से रेजिस्टेंस निकलता था रो एल बाय ए. हम्म. तो ये भी A है. हाँ, क्योंकि रेजिस्टेंस हैज टू स्टे यूनिफॉर्म. यस सर. क्योंकि उसी से पोटेंशियल ग्रेडियंट आएगा. करंट ही डिसाइड करेगा कि करंट सॉरी रेजिस्टेंस ऑफ द पोटेंशियोमीटर जो है वो होगा बेसिकली आर का फॉर्मूला रो एल बाय ए. इफ यू रिमेंबर रो एल बाय ए, राइट. सो इफ यू वांट रो एल बाय ए इज योर रेजिस्टेंस. और अगर ये बदलता रहेगा तारों में, मतलब एक तार मोटी और एक तार पतली, तो योर यस सर. पोटेंशियल ड्रॉप विल नॉट बी यूनिफॉर्म. हम्म. 100 सेंटीमीटर में 50 सेंटीमीटर में पोटेंशियल ड्रॉप अलग आ जाएगा और दूसरी जगह अलग आ जाएगा. करेक्ट. तो आपकी सारी कैलकुलेशंस गड़बड़ हो जाएंगी. सो थ्रू आउट द वायर प्लीज कीप द क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिफॉर्म so that your potential drop, which is V by L, remains same. ठीक है. तो फोर्थ स्टेटमेंट नहीं दिख रही मुझे. है? फोर्थ स्टेटमेंट नहीं दिख रही. Okay. हाँ ओके. Wait, I can. हाँ जी. E होगा. देखो एमीटर बेसिकली जो है इट इज पुट इन सीरीज. जैसे नल डिफ्लेक्शन गैल्वानोमीटर होता है वो, या एमीटर जो, क्योंकि करंट नापना है तो सीरीज में रखते हैं हमेशा, यस सर. राइट. और शंट का कॉन्सेप्ट आपको मालूम है. द शंट ऑफ एन एमीटर is used to decrease the resistance of the ammeter. एमीटर सीरीज में लगा, अगर एमीटर का रेजिस्टेंस बहुत हाई होगा तो एमीटर खुद ही वोल्टेज ड्रॉप बहुत हो जाएगा और करंट भी बदल देगा सर्किट का, अगर रेजिस्टेंस हाई है तो. नापने करंट आए थे और एक ऐसा डिवाइस डाल दिया जो हाई रेजिस्टेंस का अगर हुआ तो सर्किट का करंट ही बदल देगा.
करेक्ट। उसको ऐसे मेजरमेंट करनी चाहिए कि वो रेजिस्टेंस ऐसा होना चाहिए कि वो करंट भी न बजाए और करंट बदले भी ना। हम्म। क्योंकि प्रॉब्लम जैसे वोल्ट मीटर में है, वो वोल्ट मीटर पैरेलल में ज्वाइन होता है, लेकिन वोल्टेज डिस्टर्ब कर देता है, हाँ। करंट ले लेता है थोड़ा सा। ये जो एमीटर है ये पैरेलल में नहीं लगता वोल्ट मीटर की तरह, इट इज कनेक्टेड इन सीरीज, बट ओके। इट इज ऑलवेज ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, सबसे छोटा। और ठीक है। उसका रेजिस्टेंस छोटा करने के लिए एमीटर के अंदर कंस्ट्रक्शन में एक शंट लगा देते हैं, जिससे कि एमीटर का रेजिस्टेंस बहुत छोटा हो जाए। समझ गया। ठीक है, तो स्टेटमेंट वन इज false. You cannot have greater resistance to measure more current. हम्म। रेंज मतलब है आप 5 से 10 एम्पियर मेजर करना चाहते हो, you यस need सर। to have the lowest resistance of an ammeter for greater range. But yes, you can increase the range of the ammeter by putting a shunt in parallel to the resistance of the ammeter, so that the overall resistance of the ammeter goes down. ठीक है। ठीक है, मतलब आप देखो जनरली अगर आपका एक सर्किट है, मान लो यू आर डूइंग अ किरशॉफ्स क्वेश्चन, राइट। हम्म। अगर आपका एक किरशॉफ्स का क्वेश्चन है और तो उसके इसका अंदर सी आंसर हो गया किसका, इसका। नहीं नहीं, ये स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो सी आंसर हो गया ना, वो उल्टा। अच्छा। कौन सा है? ई पार्ट। हाँ देखो, द रेंज कैसे बढ़ाते हैं आप देखो। इफ यू हैव द resist a circuit which is complex, right? हम्म। It's a complex circuit for example, और आपको यहाँ करंट नापना है, यहाँ बैटरी लगी हुई है, यहाँ भी बैटरी लगी हुई है, यहाँ भी बैटरी है। यू पुट एन एमीटर हेयर, एमीटर हैज टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन द सर्किट विदाउट चेंजिंग द करंट ऑफ द सर्किट। अगर मान लो ये 10 ओम है और रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट 20 ओम्स है, तो करंट गड़बड़ा जाएगा पूरे सर्किट में, हम्म। 20 ओम भी तो ऐड हो जाएगा ना। यस। So your overall aim is always to keep the resistance of the ammeter lowest. Resistance of ammeter should be lowest. ठीक है। तो पहली बात तो ये बिल्कुल गलत है कि द हायर द रेंज द ग्रेटर। रेंज बढ़ानी है, मान लो पहले आपका जो एमीटर था वो 0 to 5 एम्पियर तक नाप सकता था, दिस इज अ रेंज। नाउ यू वांट दैट द सेम एमीटर should be able to measure 0 to 10. पहली बात तो जब रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर की बात होती है, इट हैज टू बी वेरी स्मॉल। और दूसरी बात है, अगर एक एमीटर 5 एम्पियर तक नाप सकता था और अब आप चाहते हो वो 10 एम्पियर नाप ले, ठीक है। ठीक है। तो व्हाट डू सो हाउ डू यू इंक्रीज द रेंज ऑफ अ एमीटर इज द टॉपिक। हम्म। One is ammeter resistance has to be low, otherwise it will disturb the measurement of the current. The second topic is how to handle the range of an ammeter. If the range of an ammeter has to be doubled, what do you do? ठीक है, let me just show you. इसको मैं आपको डायग्राम बना के, let's discuss this on a whiteboard so that the circuit is clear to you कि ammeter के केस के अंदर what do we do. I'm just copying it. ये देखो, I'll just copy this question on the whiteboard. ये हमने थ्योरी में वैसे पढ़ा नहीं, 10th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है ये। दिस इज नॉट अ 11th स्टैंडर्ड क्वेश्चन इन इटसेल्फ, ओके। ओके, तो हमें अब रजिस्टर, हमें रेंज बढ़ानी है
एक एमीटर की. ओके, हाउ डू वी डू दैट? तो रेंज बेसिकली इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी होती है. पहले 5 एम्पियर थी और अब आप इसकी रेंज बढ़ा के यू वांट दिस टू गो अबव अ सर्टेन वैल्यू, राइट? तो हाउ डू यू डू दैट? Generally what they do is they put a shunt across it. Shunt matlab a small resistance is connected in parallel to the resistant device itself. Okay. जो तो शंट लगा देते हैं उसके अंदर. ओके, और इट्स अ स्मॉल रेजिस्टेंस. लेट मी शो यू द डायग्राम ऑफ द शंट ऑल्सो, सो दैट 10th स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट है बट गुड टू नो कॉन्सेप्ट है. जेई में आपके काम आ सकता है ये. ये लो, this is your board. Look at this. So look at the resistance which is measuring about, and you're putting in RS in parallel to the resistance of the, ये आपका डिवाइस है जो गोल में नजर है एमीटर. उसके बेसिकली व्हाट यू आर डूइंग इज, मान लो द एमीटर रेजिस्टेंस इज 5 ohms. एग्जाम्पल के तौर पे, कमला बंद कर दे एक सेकेंड. 5 ohms. What you do, you connect a 0.002 ohm resistance in the. Give me 1 second, यार. ठीक है. Sorry. So what we do is we bring a small resistance in parallel to it. So let's see what is the total. Okay, so this will be 1 by 5 plus 1000 divided by 2 is equal to net new resistance of the ammeter. तो ये आपका आ गया 10, ये 5 2 2000 लिख दिया मैंने यहाँ पे. So 200s are 2 कितना हो जाएगा 500. हाँ. Basically it is 500 plus 1 by 5, right? Correct. So this will become 1 by R is equal to 500.2. So R is equal to 1 upon 500.2. So what you started with the resistance of 5. After connecting the shunt, your new resistance is this much, which is very low. हाँ. ठीक है. So now if it is connected in series with the circuit and some current is passing, because the resistance is very low, the potential drop across it is very small. So it does not disturb the current. If its resistance is very high, it will disturb the circuit a lot. Okay. So our main aim is to reduce the. Now basically the second part of the question is that what about the range, right? So you want the range to be changed. How do you control the range? If you see so we always have to play with the shunt to control the range. Okay. So earlier you could measure 5 ampere. Now somebody says, please measure 20 amperes. Increase the range, right? First part was the construction of an ammeter means that the overall resistance has to be very low, which we did by adding the shunt. In the second part, now you are saying ki we are not satisfied with the range. We are happy that you have decreased the resistance, but now we want you to change the range of the device. It should be able to measure maybe more, or it should be able to measure less.
something like that, right? So with the now, what construction changes will you do internally inside the uh, ammeter to be able to change its range? That is a question, Yes, sir. right? Obviously you have to use shunt, but you have to decide whether the that shunt will be increased or decreased for the purpose of range के लिए उसको क्या करना है, Hmm. right? So if you think the shunt की वैल्यू और बड़ी कर देंगे, you think the value of the overall resistance will go up or down? अब होगी. एमीटर की जो शंट है, अगर आप उसका वैल्यू और बढ़ा देंगे, राइट, व्हाट विल हैपन टू इट? डाउन जानी चाहिए. एग्जैक्टली, राइट. सो व्हाट यू डू, यू ऑलवेज कनेक्ट shunt in series and then you change the value of, so adding the shunt, जैसे आपने एमीटर खरीदा था, यू बॉट एन एमीटर, तब भी तो उस समय भी तो एमीटर की रेंज थी. Yes, sir. अब आपने उसकी रेंज बदली कैसे? एक एमीटर था, उसकी एक रेंज थी, आपने उसकी रेंज बदली उसके पैरेलल में शंट लगा के. ठीक है. ठीक है, तो आपको बेसिकली जो क्वेश्चन पूछा गया, इफ यू सी द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन, आई थिंक व्हाट इज द लैंग्वेज, टू इंक्रीज द रेंज ऑफ, नाउ ही सेज आर को और बढ़ा लो, ये वाले आर को, ये वाले को, इसको और बढ़ा लो, राइट, इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द शंट रेजिस्टेंस, मतलब एड मोर शंट टू इट. इसके हो सकता है ही सेइंग सीरीज में और बढ़ा लो. इफ यू इंक्रीज इट तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, करेक्ट, और फिर इसके पैरेलल में आ जाएंगे. अब अगर यहां पे मैं वैल्यू लिख दूं जुड़ने के बाद ये 5, तो दिस विल बिकम 1/5 प्लस 1000 डिवाइडेड बाय 5 is equal to 1/5 plus 200, which means the overall resistance will be 1/200.2. This is, है ना, उल्टा लिख दी. और पहले कितनी थी अगर आप देखोगे, it was 500.2. So your effective resistance has gone up, ये बड़ा है. If you add a shunt here in series, the overall resistance of the circuit, what happens to it? It increases. करेक्ट, right? तो अगर आप ऐसा करोगे तो फिर से आप यू आर गोइंग टू मेक द एमीटर लेस सेंसिटिव. बिल्कुल. It will not give you that sensitivity because it is going to disturb the सर्किट. रेजिस्टेंस शंट बढ़ा दोगे जरूरत से ज्यादा. पहले आपने एक शंट पे एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस एक्वायर कर लिया, अब आपने शंट रेजिस्टेंस को एक रेजिस्टेंस सीरीज में और लगा लिया, तो शंट का रेजिस्टेंस बढ़ गया और ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर हैज गॉन अप. इफ द ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर गोज अप, इट विल क्रिएट न्यूसेंस फॉर द सर्किट. रेंज बढ़ेगी नहीं, घटेगी. यस सर. राइट. सो इसमें अगर आप ध्यान से देखो, if you add additional shunt, range will not increase. माने वो ज्यादा करंट नहीं नाप पाएगा, और कम सेंसिटिव हो जाएगा वो. समझ गया. ठीक है. सो दिस C is the correct. What is the correct? Okay, both are false. You should not increase you should not put additional shunt. Additional shunt का मतलब है you are saying पहले I was RS and I will add some more RS. Don't do this. Add one more RS in parallel. Add it like this. And further lower the resistance of the ammeter. Okay. The larger is the RS, the resistance of the ammeter increases. But smaller you keep, इसको घटाते जाओ, 0.0002 से you reduce it to 0.0001.
you will realize that the now the overall resistance further reduces, and that is what you want. ठीक है. ठीक है. This is a 10 standard concept. Small revision might help you in your JEE examination. Okay, let me just. Okay. Next. लेकिन सर उसका आंसर तो डी आया था. देखो, the resistance of ideal voltmeter should be infinite. It will not draw any current. अगर infinite हो गया और parallel में आप connect करोगे, if you connect a voltmeter in parallel, which is what you want, you do connect it in parallel, but जिधर भी आप पैरेलल में लगाओगे उससे करंट ना ले, तो वो तब पॉसिबल है जब इसका अपना रेजिस्टेंस इनफाइनाइट ही हो. अच्छा. ये आपका सर्किट है, मान लो दिस इज योर सर्किट एंड यू हैव कनेक्टेड वोल्टमीटर है. सम करंट इज एंटरिंग, क्योंकि इसका इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, नो करंट विल गो, राइट. So remember, voltmeter resistance is infinite and ammeter tends to 0. कम से कम रखना होता है. Voltmeter should not draw any current from the circuit without, which is wrong. It does draw some current, हो ही जाता है. Potentiometer इसलिए better रहता है, क्योंकि voltmeter will draw some current. तो potential जो यहाँ पे जो current जो आप potential नाप रहे हो, current तो आपने थोड़ा सा change कर दिया है, जो enter हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप भी बदल गया. करेक्ट. तो गलत नहीं, यहाँ रीडिंग गलत आ जाएगी. ठीक है. लोअर रेजिस्टेंस ऑफ अ वोल्टमीटर गिव्स रीडिंग लोअर देन द एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द. यस इट डज. अगर आपने यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस इन्फिनिटी की जगह छोटा सा रख दिया, मतलब 10,000 ओम की जगह 9,000 ओम कर दिया, व्हाट विल हैपन? इट विल ड्रॉ सम करंट. So whatever current was entering here, some part will go here, some part will go here. तो यहाँ पे जो V is equal to IR होगा, I तो कम कर दिया आपने, क्योंकि कुछ portion of the incoming current has gone to the voltmeter. तो ये जो IR है, यही तो रीडिंग है इसकी. यस सर. इन दोनों टर्मिनल्स पे. So your voltmeter should be of very high resistance, and if you don't do that, then जहाँ भी आप potential difference नाप रहे हो दो पॉइंट्स के बीच में, वहां पे पोटेंशियल ड्रॉप भी कम ही नजर आएगा. आइडियली 5 वोल्ट था, 5 वोल्ट ही आना चाहिए था, लेकिन 5 वोल्ट बनाने के लिए करंट इनटू आर ही तो था, वो करंट तो कम हो गया क्योंकि वोल्टमीटर थोड़ा सा खुद करंट ले गया. समझ गया. नेक्स्ट. लेट मी जस्ट ये हमने पढ़ा हुआ है. स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, राइट. द टर्मिनल पोटेंशियल इज V इज इक्वल टू E माइनस R. और ये पोटेंशियोमीटर है ऊपर. पोटेंशियोमीटर EMF देता है. फर्स्ट वाला थोड़ा सा देखता हूँ. पोटेंशियोमीटर के बारे में बता रहा है ना फर्स्ट में, तो वो हाँ. वोल्टमीटर कभी भी EMF देता ही नहीं है, क्योंकि वो तो बैटरी पे लगाओगे करंट. हाँ, तो ये तो पोटेंशियोमीटर करता है जो लिखा हुआ है.
अच्छा पानी किधर है मेरा? हाँ ठीक है ना. सो पहली ठीक है. स्टेटमेंट इज एक्चुअली पोटेंशियोमीटर ऑलवेज गिव्स ईएमएफ ऑफ द सेल, हम्म. क्योंकि इट डजंट ड्रॉ एनीथिंग. यस सर. याद आ गया. हाँ, आगे. वोल्ट मीटर टर्मिनल वोल्टेज नापता है. हम्म. बता दो अगर समझ नहीं आया. नहीं, समझ गया बिल्कुल. नेक्स्ट. अब पोटेंशियोमीटर की कंस्ट्रक्शन में जो पोटेंशियोमीटर का अपना सेल होता है, हम्म. जिसने सर्किट में ग्रेडियंट देना होता है, अगर वही बहुत छोटा हो जाएगा तो इट विल नॉट बी एबल टू फाइट विद द एक्सटर्नल सेल्स फॉर मेजरमेंट. यस सर. तो उसका जो ग्रेडियंट बनाने के लिए जो ईएमएफ होता है, इट हैज टू बी मेंटेन्ड ऑलवेज. हम्म. द फॉल ऑफ द पोटेंशियल दोनों करेक्ट है. हाँ, अगर आपके पास मतलब इफ यू डोंट हैव द पावर टू फाइट व्हाट यू आर मेजरिंग, तो आप मतलब अपनी लेंथ में क्या दोगे फिर? आप खुद हम्म. 5 वोल्ट लेके आए हो और मेजर 10 वोल्ट कैसे करोगे फिर आप? वही. राइट. सो योर ईएमएफ शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन दैट ऑफ द ईएमएफ ऑफ द सेल. हम्म. एंड तो मतलब हो सकता है आधी वायर में ही आप उस दूसरे ईएमएफ को मेजर कर पाओ. आधी वायर में ही 50% में ही नाप लिया आपने. ठीक है. इन अ मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट, मीटर ब्रिज के अंदर इफ यू रिमेंबर इट्स बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज, जिसके अंदर सेंटर में you had a null deflection. So one resistance was here, the second resistance is here, the third resistance is here, the fourth resistance is here. और ये वायर होती है नीचे वाली. बेसिकली सब वायर 100 सेंटीमीटर की वायर होती है ये नीचे वाली, और सेल ठीक है. होता है. और यहाँ पे नल डिफ्लेक्शन. यू लुकिंग फॉर अ नल. जॉकी लगाते हैं. वी स्टडीड राइट. हम्म. एक एक्सपेरिमेंट भी देखा था हमने. सी होना चाहिए. वाई? क्योंकि वाई डू यू क्योंकि फर्स्ट वाले तो ठीक है, ये तो हमने पढ़ा ही है. हाँ, और सेकंड में ये स्टेटमेंट ही गलत है, ये तो हमने पढ़ा ही. वी आई एज द आर होता है. रेजिस्टेंस. ये किस रेजिस्टेंस की बात कर रहा है इस पर? ये इन रेजिस्टेंस ऑफ वायर. वेट, he is always with the galvanometer. No, he is referring to galvanometer is not connected with the wire. ये वायर होती है ना उसके अंदर. हम्म. He is referring to probably the external. Language is not clear, but let me show you the meter bridge जो हमने देखा था उस टाइम पे. मीटर ब्रिज में आई एम जस्ट ओपनिंग द एनसीईआरटी ठीक है. and let's take it back, so that I had shown you an external resistance when I told you it also is going to consume a part of the potential. एक external resistance था if you remember, बाहर की तरफ. Okay, let me just open the class 12th NCERT class 12th. So this is physics, this is part 1. Go to chapter number 3. Drift velocity, resistivity है. Yes. Kirchhoff law. Okay, this was I think the Wheatstone bridge, right? हम्म. Wheatstone bridge. Where is a meter bridge in this?
अच्छा, मीटर ब्रिज इज नॉट देयर. नहीं. There is no meter bridge. Just give me 1 second. I will just copy it from other source. Meter bridge में there is an external, and maybe इसी में let's see if the he is not referring to the resistance of the wire. I think the wire resistance is not connected to galvanometer. वायर का रेजिस्टेंस गैल्वानोमीटर के साथ थोड़ा ना जोड़ते हैं. वो तो बस जॉकी के साथ गैल्वानोमीटर आता है और नल डिफ्लेक्शन ढूंढने आता है वायर के ऊपर. Yes, sir. दैट इज व्हाट इट डज. मैक्सिमम यही करता है वो. तो ये आपका अच्छा नो, दिस इज ओनली, these are only the questions. I think there is no theory in this. Wait, मीटर ब्रिज पे क्वेश्चन जो है, मीटर ब्रिज, लेट्स पिक इट अप. यस, इट्स अ प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज. हम पढ़ चुके हैं. ओके, बैलेंस लेके आना होता है इसके अंदर, राइट. एक अननोन रेजिस्टेंस होता है, एक नोन रेजिस्टेंस होता है, और बाकी वायर से बैलेंसिंग करते हैं इसकी. आई होप यू रिमेंबर दैट. Yes, sir. Okay, just if you don't, just look at this. So this is your ये था ना अपना व्हीटस्टोन ब्रिज. तो देखो हाँ, ये yes, sir. नीचे वाला जो ADC है, ADC वायर तो वही है ना जहाँ पे हमें नल पॉइंट 0 बनाना होता है. ये तो बैलेंस कंडीशन में है, तो इसमें P/R इज इक्वल टू Q/S. द रेशियो ऑफ लेफ्ट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द राइट रेजिस्टेंस, राइट. तो ये आपका रेजिस्टेंस हो गया ये वाला. ये रेजिस्टेंस की रेशियो ले ली लेफ्ट आर्म की, ये राइट आर्म की ले ली, और लेफ्ट आर्म की जो है लेंथ की टर्म्स में ले ली. वही P/Q जो होते हैं वैसे उसी से निकाल लिया बैलेंस कंडीशन में. बट इसमें आप देखो कोई रेजिस्टेंस, गैल्वानोमीटर जो यूज हो रहा है ये वाला, इधर कोई रेजिस्टेंस थोड़ा ना लगा हुआ है इसके साथ, नहीं लगा. और बाहर भी नहीं लगा हुआ बैटरी के साथ. हम्म. तो आई डोंट नो विच रेजिस्टेंस इज ही रेफरिंग टू. और ये ऐसे होता है एक्सपेरिमेंट. तो इवन इफ यू सी द एक्सपेरिमेंट मीटर ब्रिज का, उसके अंदर ये जो वायर है उसकी जो जॉकी वो B पे है जहाँ नल पॉइंट आ रहा है. तो R डिवाइडेड बाय L इज इक्वल टू S डिवाइडेड बाय 100 माइनस L. लेफ्ट आर्म का रेशियो इज इक्वल टू राइट आर्म का रेशियो. बस फर्क इतना ही है कि वो रेशियो में लेंथ आ रही है रेजिस्टेंस की जगह. I don't see any I don't know what is being asked and what are they referring to in the question. In the question, the high resistance is always connected in series with the galvanometer. ये तो मतलब कोई रेजिस्टेंस होता ही नहीं है as the resistance. So I think he's referring to some external resistance. Galvanometer में why will you connect any resistance? I am not, इसको छोड़ देते हैं फिलहाल के लिए. Okay, let's go back, go to the next one. Next भी डिस्कस करते हैं इसको, लेकिन वापस आते हैं. लेट्स कम बैक. स्टेटमेंट 1.
wires supplying current to electric heater are not heated appreciably. Electric heater matlab the element, and resistance of the connecting wire is very small. And ये क्या लिखा है? H is proportional to R. अब ये भी क्या मतलब है? We want most of the heating effect in the heater, not in the wire supplying. वो तो wastage हो जाएगी. That's dissipation. It's a wastage. So you should have good quality wires having very low resistance. अगर मीडियम जो इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने का ही खराब हो, that means the electricity that it gives to the heater, it will come through the wires. If the wires are bad quality, a lot of heating effect will be in the wire itself, which you don't want. Right. So if you have to keep the resistance of the connecting wires to be very low, they should be very good quality. Otherwise, they will take away most of your power which you or work which you wanted to give to the heater. Connecting wires तो यूज करनी पड़ती है ना. वो अगर खराब क्वालिटी की आप यूज करोगे, if you use bad quality wires, that's not good. You know, you have this battery and then you have a heater. You want most of the work it does should reach here. बट इस रास्ते में जो कनेक्टिंग वायर है वहां भी लॉस होता है I square R, क्योंकि इनका भी तो अपना रेजिस्टेंस है. तो नेट सर्किट अगर आप दिखाना चाहो तो यू कैन शो एक्चुअली द सर्किट इज दिस. लेट दिस रिप्रेजेंट द रेजिस्टेंस ऑफ द टोटल वायर, द कनेक्टिंग वायर, एंड द नीक्रोम फॉर एग्जांपल द हीटर इज दिस. तो इधर भी तो लॉस हो गया ना. कीप इट वेरी लो. ठीक है, ठीक है. So answer A is correct. You don't want the current wires to get heated. You don't. And to do so, you will keep the resistance of the connecting wire to be small. Because you know the heat generated is proportional to R. Higher is the R of the connecting wire, more heat will get lost in the connecting wire. Next. So basically I square R. So the new current is 1.2. So 1.2 into 1.2. So your new current is 1.2 whole square, which is 1.44. So the power consumption, the power being delivered is more now. ठीक है. Illumination of the lamp. हीटिंग इफेक्ट पे ही होती है ना ये भी. वो निक्रोम वगैरह 2000 केल्विन पे मेल्ट होते हैं, तो इसी उस टंगस्टन वो हीट होते जाते हैं. और अगर I square R है तो द 44% increase will be there. ठीक है. So illumination of the lamp. We had studied this illumination of the lamp. It says the illumination directly proportional to square of the current through the lamp. Why is the statement number 2 false here?
illumination of the lamp. Let me just open our book. We illumination तो क्या वो rating की बात कर रहा है? It is rated at a particular value. हाँ, यही होना चाहिए। क्योंकि वो तो रेटिंग तो V²/R होती है पावर की, वोल्टेज लिखी होती है और पावर लिखी होती है। कई बार समटाइम्स द आंसर आल्सो because the illumination is going to happen from electrical energy only. Who else will provide the illumination? The electrical energy, if you double the current or increase the current, then the then what happens to the if you're doubling the current, it says that that also is false. It is not proportional to square of my understanding is that brightness should depend on square. नहीं? If the resistance is not undergoing any change, you are providing it more energy, and that more energy is how is that energy? I think their answer is not correct. I don't think so that दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है। So I don't know if the current of the lamp is increased, why both the statements are false. I think statement 2 is pretty correct. If you see the illumination, it is proportional to the square. Okay. Question number 10th. Okay, let's see. Again a heater. If resistance high, electrical conductivity will be less. I don't think so. If the electrical conductivity is material dependent, it depends on the material, and R is equal to rho L by A. Statement 2 की बात कर रहा हूँ मैं. So if you look into statement number 2, R is equal to rho L by A. A small electrical conductivity does not mean a high resistance. To me, this is also false. Resistance is high is likely to mean that if it is only about material, then high resistivity materials
for the same length and area will give you more resistance. हम्म प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है ना, किसी मटेरियल की रेजिस्टिविटी बहुत हाई है तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट मटेरियल प्रॉपर्टी. यस सर. Higher the material property, higher will be the resistance. करेक्ट. This is true. कनेक्टिंग वायर्स की तो रेजिस्टेंस बहुत लो होनी चाहिए, इट शुड बी लो. और हीटर वायर का जो वो है, ये मेल्टिंग पॉइंट नहीं होना चाहिए. मेटेलिक पॉइंट क्या होता है? आई थिंक स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, बट स्टेटमेंट 2 इज सी इज द करेक्ट आंसर. दिस इज नॉट करेक्ट आंसर. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, यू कैनॉट ड्रॉ एनी इन्फरेंस कि अगर रेजिस्टेंस आई है तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम होगी. अच्छा, इज रेफरिंग टू, सॉरी, कंडक्टिविटी, ओके, which is inverse of resistivity. Oh, ho, ho. So R is rho L by A, but he is referring to rho as, so high, okay, so a lower resistivity is different from lower conductivity. They are inverse of each other. तो अगर आपकी कंडक्टिविटी बहुत छोटी है तो आपकी रेजिस्टिविटी बहुत बड़ी होगी, राइट? बड़ी होगी. which is then R is dead. If you have a higher resistivity element, then resistance will increase, हम्म right? But इसका उससे तो कोई लेना देना नहीं है ना. हीटर वायर मस्ट हैव हाई रेजिस्टेंस, वो ट्रू है हाँ, वो तो ठीक है. ना इसका, बट इट इज नॉट एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द अबव पॉइंट. हम्म एक जनरल स्टेटमेंट है, सच है, ये भी सच है, बट दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं है. ठीक है. There's no link between them. I mean, they are both true, but I see no connection between the explanation and the statement 1 and statement 2. It's a general statement. ये तो इसका हीटर वायर से क्या लेना देना है? Nothing. It has nothing to do with heater wire हम्म या हीटर मटेरियल. समझ गया. But ऐसे ही, okay. I should have seen that it is not resistivity but conductivity. Conductivity is 1 upon rho. Okay. Next. Both the cells are ideal, which means they have no internal resistance. हम्म You can vary which one? You can vary the R2. इसको बदल सकते हो ना. हाँ. तो बोलता है then the electric power delivered to the resistor of the resistance R1 is independent of the value of R2. कितनी पावर इसको जा रही है is not dependent. अगर आप इसे बदलती भी रहो, if you keep on changing R2, keep changing it, जो पावर डिलीवर्ड टू R है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये बोलने की कोशिश कर रहा है वो. क्योंकि R2 you can change. The arrow shows you can change it, right? यस सर. So variable one, but वो बोलता है ये फिक्स्ड है और 2 बैटरीज ऐसे लग रखी हैं. सो इज नाउ आस्किंग यू कि अगर ऐसा लग जाए तो व्हाट हैपेंस? Power delivered. The second part is the potential difference across a fixed resistance is unchanged. He is basically saying, agar if I look at without doing any calculation, if I have to compare it, this is what he is
saying? Okay, he's saying that these two will produce currents in different branches, right? Some current will flow here and some current will flow here. If I apply KVL on both the sides and I write for this left loop, I can write the source is E and I'm traveling it like this. Supposingly my current direction is also same, right? So E is equal to I1 इंटू R1 और इसमें मान लो करंट भी मेरा जो है यूं जा रहा है और इसमें मेरा करंट I3 है और इसके अंदर मेरा नेट करंट जो है आउटवर्ड करंट के बराबर होना चाहिए. इनवर्ड करंट इज I1 यहाँ पे, आउटवर्ड करंट इज I3, so the balance is I1 minus I3, right? So plus I1 minus I3 into R2. Let me write for E2. If I move in E2 like this, E2 is equal to I1 minus I3 into R2, center wala, right? Now what I do is I calculate, and this is my fixed potential, right? Yes, If sir. I try and solve this and I subtract it, I will get E1 minus E2 is equal to, ये दोनों कट जाएंगे, हाँ. I1 into R1. तो जो करंट आ रहा है I1, which is the current located in the first loop, यहाँ पे है ना I1, हाँ. it is coming out to be E1 minus E2 by R1. Do you see that current के expression में I1 में R2 है ही नहीं, नहीं है. right? और अगर मुझे ये निकालना है कि I know I1, then I can also put the value of I1 here and calculate the value of I3 also. So let me calculate the value of I3. So E1 is equal to I1 R1 plus I1 minus I3 into R2. Right, so I've calculated the value of I1 now. It is E1 minus E2 divided by R1 plus I1 I know is E1 minus E2 upon R1 minus I3 into R2. And this is how much? मैंने एक्सप्रेशन नंबर 1 में डाला ना सारा. ओके, सो दिस इज E1. यहाँ भी डाल सकता था, थोड़ा इजी हो जाता कैलकुलेशन में. But anyway, so if I do the calculation now and try and solve it, I will get E1 minus E2 by R1 into R1. यहाँ डाला मैंने I1, ये कट गया. I am getting E1 minus E2 and here I will get E1 minus E2 minus I3 R1. Okay, let's use this because it's easier to solve. E2 is equal to E1 minus E2 by R1 minus I3 into R2. Right? So if I solve this, first is the current in the resistance R is only dependent on the difference in the potential of the batteries and R1. So the potential drop across the fixed resistance is unchanged. आया ही नहीं ना R2. R2 से फर्क नहीं पड़ा और रीजन क्या है, वो पैरेलल में आ रहा है सारा. This cell is terminating at the same 2 points where this, अच्छा नहीं, ये resistance, इसका तो resistance drop होके आ रहा है. ओके, और लेट मी जस्ट, इसको मैं कॉपी करके थोड़ा वहाँ पे लिख लेता हूँ क्योंकि वी विल हैव no space left to do this, but doing bit of calculation where we don't have any space. Look at the first part. ये तो आ गया, the power delivered will remain unchanged. Let's do just simple calculation and then we will see if there's a
wait. Acha, if I share it will not work. Okay, let me use the snippet. अभी भी कॉपी नहीं हुआ, हो गया. It's a bit of calculation and nothing else, कुछ नहीं है. देखो आ गया. हाँ अब आ गया. In the circuit, both cells are ideal and of fixed resistor. Okay, so we have already done one. We have applied here the Kirchhoff's law, and we have found out already that E1 potential gain is equal to I1 R1 plus I1 minus I3. I3 यहाँ भेज दिया था मैंने, ये इनकमिंग था, तो ये आउटगोइंग है. एक आउटगोइंग और दिखा दिया I1 माइनस I3 ये वाला इंटू R2, और इसके अंदर भी लगा लिया मैंने इस डायरेक्शन में. मेरा बन गया E2 इज इक्वल टू I3. अच्छा नहीं, इसके अंदर इफ यू नोट आई एम मूविंग इन दिस डायरेक्शन, राइट? यस सर. सो ये दोनों ऑपोजिट है I3 और लेकिन I3 में कोई बाई चांस आया कुछ नहीं रजिस्टर, तो फिर मैं यहाँ जब घुसा तो मेरा सही आ गया करंट का डायरेक्शन और लूप का डायरेक्शन यस सर. सेम ही हो गया ना. तो फिर ठीक ही लिखा था I3 इंटू सॉरी I3 माइनस I1 multiply by R2. So what I did was I actually did if I subtract this, I will get E1 minus E2. And why I have written, okay, sorry, this is I1 minus I3. If I subtract this, I will get this, which means the current which is going in R1 is equal to the difference of the two potential divided by the resistance of R1. तो करंट जो लेफ्ट लूप में है मतलब R1 में, उसका R2 के एक्सप्रेशन में ही नहीं है वो. नाउ लेट्स कैलकुलेट I3 आल्सो. वी हैव टू कैलकुलेट I3. तो मैं आई वाज सेइंग कि लेट्स यूज दिस. सो E2 इज इक्वल टू E1 माइनस E2 अपॉन R1 माइनस I3 into R2. Okay, let's do that. So E2 is equal to E1 minus E2 upon R1 into R2 minus I3 into R2. So what I'm doing now is I am taking I3 into R2 is equal to E1 minus E2 by R1 into R1 minus E2, and my I3 current is equal to E1 minus E2. Sorry, this was how much? R1, right? And this is how much? R2. ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना R2 से. डिनोमिनेटर में R1 है, R1, और ये R2 है, और ये जब ब्रैकेट खोला ये I3 R2 बन गया, और वो I3 R2 मैं लेफ्ट साइड पे ले गया और I2 को मैं इस साइड ले गया, E2 को, सॉरी. सो E1 माइनस E2 अपॉन, वापस R2 को मैं यहाँ ला रहा हूँ, माइनस E1 इज इक्वल टू, कट गया. सो दिस इज E1 अपॉन R1 minus E2 upon R1 minus E1, and therefore I3 is equal to E1 1 by R1 minus 1 minus E2 by R1. Do you see the current in the second arm, which is this arm, has no R2 in it? Yes sir. So if you, let's read the first part.
Statement 1, in the circuit both cells are of ideal and that has fixed resistance and but then the electric power delivered to resistor of R1 is independent of the value of R2. Yes, it is. The electric बिल्कुल power delivered will be I1 square R1. इसकी बात कर रहा अग्रीड है, राइट? तो आई में तो R2 है ही नहीं, मिसिंग है। हम्म और वो जो है अपना सेकेंड पार्ट, if the if potential difference across the fixed resistance is unchanged, the power delivered to the resistor remains constant. Yes. अग्रीड If the potential difference across the fixed, ये fixed है, इसका तो पोटेंशियल डिफरेंस आप चेंज ही नहीं कर सकते क्योंकि आर कोई कोई बैटरी तो सेम ही रहेगी। R2 वेरिएबल है, R2 को आप चेंज करते रहो, लेकिन R2 का कोई असर इम्पैक्ट नहीं आ रहा ना I1 में ना उसमें I3 में, R1 में आ यस रहा है सर सारा आंसर। So whatever is the potential drop even here. Okay, so we have calculated I3 and then we can calculate how much is the value of the potential drop here. अगर वो निकालना चाहे तो हमें निकालना पड़ेगा, बेसिकली वी विल हैव टू कैलकुलेट R2 इंटू I1 माइनस I3, यहाँ पे जो होगा। तो अगर मैं R2 लिखूं और मैं I1 लिखूं तो मेरा I1 तो आ गया था E1 माइनस E2 बाई R1 माइनस I3, राइट? व्हाट इज I3? ये रहा I3 माइनस E1 बाय R1 माइनस E1 माइनस E2 बाय R1, right? Let's solve this now. So E1 by R1 minus E2 by R1 minus E1 by R1 plus E1 plus E2 by R1, ये कट गया, ये भी कट गया। यस तो सर इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना आ गया एक्चुअली? क्योंकि इट इज कनेक्टेड पैरेलल टू E2, इसका पोटेंशियल नेट आ गया है R1 E1 माइनस ये जो मैंने मल्टीप्लाई करा था R2 में अंदर ले गया था, तो R2 1 R2 E1, ये R2 भी तो आएगा कि यहाँ पे? हाँ कोई ना कोई ऐसी, दिस इज ऑल्सो R2, but this is not let's be एक क्लैरिटी ले आते हैं। This is R into some current and the current in R1 is coming out to be the potential difference. Why I have written R2? क्योंकि हम R2 में निकाल रहे हैं और I1 माइनस I3 कर रहे हैं, तो ये तो R2 इंटू I1 करना है। पहले I1 की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ, फिर R2 को मुझे अच्छा ये भी तो R2 से मल्टीप्लाई होगा। Shit. So this will become also R2. This will also, तो कट तो अभी भी गए। हाँ So this net potential is coming out to be E1, मतलब इसमें जो पोटेंशियल आ रहा है इट इज कमिंग आउट टू बी E1 इज इक्वल टू सो मेरे को निकालना तो फाइनली वो था ना, potential drop across R2. The potential drop across R2, sorry, this will also get multiplied by R2. करेक्ट So minus minus plus, so ये इधर भी R2 लिखना है मुझे एक्चुअली। I hope I'm writing correctly. Why this is E1 only? We have done some error because there has ये तो फिर वोल्ट वो बन गया ना पोटेंशियल, और नीचे रेजिस्टेंस ही नहीं है, करंट। अच्छा 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 करंट का है, हाँ एक मिनट, E1 I3 ये हो गया E1 माइनस E2 डिवाइडेड बाय R1 इंटू R2
और I3 की वैल्यू हमें मालूम है। इसमें I2 को मैं उस तरफ ले गया, I3 का R2 भी मैं नीचे ले गया, I3 का R2 मैं उस साइड ले गया, तो E1 माइनस E2 R2 और R2 कट गए, ये वाला कट गया। सॉरी, ये जब R2 में यहाँ ले गया था तो क्या आना चाहिए था यहाँ पे? ओ यार, द ब्लडी कैलकुलेशन एरर्स। अब जब ये I1 I3 को कैलकुलेट करा तो ये हो गया R2। सो यहाँ पे भी जो लिखा है दिस शुड बी, सो ये वाला जो वैल्यू है इट इज E1 बाई R1 R2, सॉरी E1 बाई R2 N2, तो सिर्फ E1 ही बचा। यस तो सर। तो करंट का जो डिफरेंस है मल्टीप्लाई विद R2 इज E1। So the net ठीक है। current in the resistance R2, the net potential difference is this, equal to E1. If you, तो ये potential across E1 हमारा ये निकाला, R2 into I1 minus I3 सॉल्व कर लिया, ये हमारा आंसर आ गया। ये ओके, E1 के बराबर आ रहा है इसमें। ओके, if the potential across is unchanged, the power delivered to the remains potential difference across the fixed resistance is unchanged। ये V की बात कर रहा है इसमें, ये I की बात ही नहीं कर रहा है। ये कह रहा है कि यहाँ पे अगर V सेम रहेगा, जो होगा I1 R1, if you deliver at the same potential, the power delivered will remain only is referring to V square by R। ठीक। Okay. I don't know, is it tricky or is it poorly drafted questions? Maybe tricky. It doesn't look like too tricky, but पहला पार्ट तो क्लियर है कि it is independent of the value of R2 because it's I square R। हम्म। Okay, let's yes, I दोनों ही ठीक थे। He's saying potential in the second statement, he means the current remains the same। हम्म। V is equal to IR है ना। यस सर। I in the resistor R1 has come independent of R2। अगर करंट करेक्ट। को फर्क ही नहीं पड़ता R1 से, तो उसका पोटेंशियल भी सेम कांस्टेंट ही रहेगा। हम्म। So both are right। Well, there should be a smaller way to do this anyway। Question number 12। सर मैं एक सेकंड में आ रहा हूँ। हाँ। यस सर।
Oh, you're back? Yes, sir. Okay. All right. Okay. Let's move forward. Statement, question number 12. तो मुझे दिख नहीं रहा। अब ठीक There is no need to pay the current. Wow, beta. है। This is totally false. Yes, sir. बोथ ही लग रही है, बोथ आर फॉल्स। We pay for the joules. We don't pay for power. हम्म। पावर तो हमारा आइटम होता है ना, लेकिन हम तो टाइम Yes, के sir. हिसाब से देते हैं. हाँ, हमें इनटू टाइम भी करना पड़ता है. वी पे फॉर जूल्स वी कंज्यूम, नॉट फॉर द पावर इन अवर हाउस. हम correct. 4 टन के 10 टन के एसी की के पावर के पैसे नहीं देते, एनर्जी के पैसे देते हैं, जूल्स के. हम्म। किलोवाट आवर. नेक्स्ट. नो, इट इज इन सीरीज विद द बैटरी. हम्म। जो ड्रॉ करते हैं छोटा सा रेजिस्टेंस बैटरी के साथ सीरीज में दिखाते हैं. And the heat generated in the battery is because of the chemical reactions which are happening, not the wire. बैटरी ठीक वैसे है। ही गर्म होती है जब इस्तेमाल होती है, वो इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, केमिकल रिएक्शन है. समझ गए। ये तुम अभी कर नहीं पाओगे, रुक जाओ. हो गए. 15th करो तुम. बट अगर आप कॉमन सेंस लगाओ तो जो सडन सर्ज ऑफ करंट है ना, जो आता है हम्म। आपके घर में, ऑन करने पे अचानक करंट बढ़ता जाता है, Yes, sir. और ऑफ करने पे भी इट सडनली रिड्यूसेस. Correct. So the rate of change of current at the time of on and off is very high. Okay. वो ट्रू है. फिर समझ। स्टडी हो जाता है. फिर वो एसी की नॉलेज होनी चाहिए आपको, इंडक्टिव सर्च का क्या मतलब होता है. नेक्स्ट. 15th. अगर हम ब्राइटनेस की बात कर रहे थे तो हमने पढ़ा था, दो बल्ब्स की ब्राइटनेस जो है रेटिंग लिखी होती है, राइट. दो बोथ आर वर्किंग एट सम सेम वोल्टेज जनरली हम्म। 220 या जो भी दे रखी है. फर्क तो रेजिस्टेंस में ही होता है उन दोनों का. V square by R. Assume both are of the same rating. जिसका रेजिस्टेंस कम होगा ये हमने पढ़े थे. बल्ब इन सीरीज, बल्ब्स इन पैरेलल, एंड देन इंडिविजुअली बल्ब्स की जो रेटिंग होती है उससे कैसे आप निकल सकती है। V square by R. हम्म। थोड़ी क्वेश्चन की आर्टिकुलेशन सही नहीं लग रही मुझे. मतलब वी शुड हैव क्लियरली स्पेसिफाइड कि जो बल्ब्स हैं दे आर एट द सेम पोटेंशियल. तो तुम मान लो कि दोनों ही 220 पे हैं.
ठीक है। अज्यूम दैट, क्योंकि दिया नहीं, हमने मार्किंग दे रखी होती है। 200 वॉट का बल्ब जो है 220 पे, और 100 वॉल्ट का बल्ब भी जो है 100 वॉट्स वो भी 220 पे। ये कोई दोनों की आइडेंटिकल वोल्टेज दो नहीं, तो इट्स नॉट अ फेयर कंपैरिजन। मार्किंग ऑफ द वोल्टेज, द कंडीशन इन विच द बल्ब इज ऑपरेटिंग शुड बी आइडेंटिकल इफ यू वांट टू कंपेयर इजीली। करेक्ट। अब देखो, तो अगर आपको मालूम है कि ये सिचुएशन होती है, बल्ब्स की इंडिपेंडेंटली मार्किंग है, तो आपको सिर्फ क्या करना है, बेसिकली यू हैव टू फाइंड द वी नॉट स्क्वायर बाय P1। हम्म। पहली बात तो 200 वॉट का बल्ब क्या ज़्यादा तेज ग्लो करता है अगर वो दोनों अलग अलग हो? तो आपको मालूम है कि पावर का क्या फॉर्मूला था, वी स्क्वायर बाय आर। और 100 वॉट का जो बल्ब है उसकी जो इल्यूमिनेशन है, ये सीरीज पैरेलल में नहीं जोड़े, अलग अलग है। हम्म। तो 100 वॉट का बल्ब ज़्यादा थोड़ा इल्यूमिनेट करता है इंडिपेंडेंटली, नहीं। सो इट हैज़ मोर रेजिस्टेंस। करेक्ट। So the more resistance means its power is V naught square by R। अगर R बड़ा है तो पावर कम हो गई। हम्म। 200 वॉट का बल्ब है, उसका रेजिस्टेंस अगर आप नोट करोगे तो वो कम ही होगा, यस सर। है ना? तो इफ, तो बेसिकली द पावर रेटिंग जो होती है बल्ब की, और एक होती है वोल्टेज रेटिंग। वो वोल्टेज रेटिंग मैंने सेम ही मान लिया, तो करंट ड्रॉन भी आप निकाल सकते हो दोनों में। व्हाट इज अ करंट ड्रॉन? व्हाट्स योर आंसर देन? सही है ना, रेजिस्टेंस पे डिपेंडेंट यही है। होना चाहिए। P इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर बाय आर। हम्म। P इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर बाय आर, दोनों का वी नॉट स्क्वायर सेम होगा। यस सर। आर निकालना है बेसिकली दोनों का। हम्म। जिसका बड़ा आर होगा उसकी पी गिर जाएगी ना। यस सर। उसका आर होगा पी नॉट स्क्वायर बाय उसकी पावर, जिसकी पावर बड़ी है उसका आर जो है छोटा आ जाएगा, जिसकी पावर छोटी है उसका आर बढ़ जाएगा, क्योंकि वोल्टेज रेटिंग इज सेम। ठीक है। लेकिन आई होप, आई एम जस्ट डूइंग अ कंपैरिजन ऑफ फर्स्ट बल्ब as V naught square by R1, second bulb is V2 is equal to V naught square by R2, right? हाँ। जो पावर वन है आपकी, राइट, दैट इज व्हाट, 200। हम्म। तो मैं अगर R1 निकालना चाहूँ तो R1 कितना आएगा मेरा, और अगर मैं R2 निकालना चाहूँ तो कितना आएगा? तो ये इसका रेजिस्टेंस बड़ा आएगा ना, यस सर। हाँ। जिसकी पावर कम है उसका रेजिस्टेंस बड़ा है, इसका मतलब। यस सर। और इसकी पावर ज़्यादा है तो ये रेजिस्टेंस छोटा हो जाएगा। हम्म। तो ये सच है ना, द 100 वॉट बल्ब हैज मोर रेजिस्टेंस। हाँ ये तो। और ग्लोइंग में तो मतलब कोई डाउट ही नहीं है। अगर ऐसा ना हो हम्म। तो फिर दुनिया छोटे बल्ब ना खरीदना शुरू कर दे। वही। मैं 10 वोट वोल्ट वॉट का लाया, मेरा बहुत ज़्यादा ब्राइट है, तो कमाल है यार। ओके। ठीक है, समझ गया। ये हमने पढ़ा था थोड़ा सा। हम्म। अगर फ्यूज वायर का ही रेजिस्टेंस हाई हो गया और लो मेल्टिंग पॉइंट, फ्यूज वायर का रेजिस्टेंस हाई है, मेल्टिंग पॉइंट लो है, ये तो पक्का है। हाँ। 2 बिल्कुल गलत है। हम्म।
इट इज यूज्ड ओनली व्हेन द करंट गोज अप। बड़े बड़ी जगह पे यूज होता है, आग लगने का खतरा है, तो फ्यूज इज यूज फॉर स्मॉल करंट फ्लो ओनली। रॉन्ग। ये तो इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट है। बट शुड अ फ्यूज वायर हैव हाई रेजिस्टेंस? क्योंकि इफ इट हैज हाई रेजिस्टेंस, then how is it contributing to the circuit? If a fuse wire has high resistance, melting point should be low, जल्दी पिघल जाना चाहिए, right? एकदम हम्म। high current देखते it should work accordingly. It should immediately go out. But what happens to the fuse? और आपको मालूम है फ्यूज के अंदर जो भी हीट होती है, it gets lost on the surface area. यस सर। Right? We also know that ki the question is what should be the nature of fuse for us to be able to comment on whether the resistance of the fuse should be high or low. Melting point has to be low, नहीं तो वो पिघलेगा ही नहीं, बिल्कुल। which is very dangerous. But resistance of the fuse should be high. मतलब how does it, property of a fuse की अगर बात करें तो how does it help? Melting point, high resistance का क्या मतलब है? Is he saying that the वो जो सर्ज होता है अचानक ही, जो करंट ऑन होते ही बढ़ता है, उसको कंट्रोल करने के लिए हाई रेजिस्टेंस लगा रखा है शुरू में? गिव मी 1 सेकेंड, लेट मी चेक अवर डियर बुक. Yeah. I'm not too sure about this. Low melting point is 100%. ठीक है? But what do I achieve by a high resistance of the low एम्पियर रखने में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. But why should I keep the I think the question is wrong. Only the resistivity जो मटीरियल है वो हाई होनी चाहिए, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स. अपने आप में हाई रेजिस्टेंस फ्यूज जो है, वाई इट शुड हैव, मटीरियल की सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन डेफिनेटली द मेल्टिंग, कि जल्दी मेल्ट हो जाए. लेकिन ज़्यादा हाई वैल्यू रख के और छोटे साइज का होना चाहिए, बड़ा तो नहीं होना चाहिए, छोटा सा ही होगा. वाई द फ्यूज शुड हैव मेल्टिंग पॉइंट इज लाउड एंड क्लियर. ज़्यादा करंट गया, गर्म हो गया, पिघल गया. बट yeah, I disagree with the answer here. My answer is you can buy a fuse which is having very good conductivity. मतलब करंट को जाने दे, अड़चन ना बने करंट के लिए. अच्छा। ठीक है. और बट इसका रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए? आई डोंट थिंक सो. समझ गए। इट शुड बी, it should of be a material कि that material does not create a problem for anyone. कि उसका अपना ही जो वो है रेजिस्टिविटी, मतलब प्रॉपर्टी है रेजिस्टिविटी. रेजिस्टेंस तो रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया पे डिपेंडेंट होता है. करेक्ट। मटेरियल तो आपने जो चुनना है उसकी रेजिस्टिविटी होनी चाहिए, मतलब सिलेक्शन में.
मतलब प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल पे ज्यादा फोकस है देन कि वो आउटपुट क्या दे रहा है रेजिस्टेंस का। हाँ। मेरे ख्याल से क्वेश्चन इज नॉट करेक्ट, इट इज अ रॉन्ग आंसर। वी विल नॉट टेक इट वेरी सीरियसली, छोड़ दो, नहीं, आई डिसएग्री विद इट। जस्ट बिकॉज उसने लिख दिया है, ओके। व्हाट यू डू नाउ इज यू कंटिन्यू टू डू दीज न्यूमेरिकल्स, रीजनिंग असर्शन, इसमें आपको बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मिल जाएंगे अच्छा। सीबीएसई बोर्ड के, देखो, है ना, वही एक तरह से केस स्टडी, हम्म। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस भी मिल गए आपको, तो आपका यू विल, इट विल ओपन योर माइंड, ठीक है। गिव यू गुड इंसाइट कि आप जब सामने अननोन क्वेश्चंस आते हैं तो हाउ डू यू मैनेज them. इलेक्ट्रिक फ्यूज, ओके, हम्म। is a protective device used with electrolyte to save it from damage due to overheating by strong current, ठीक है। फ्यूज वायर इज मेड अप ऑफ लेड एंड टिन एंड हाई रेजिस्टेंस, इट इज कनेक्ट, ये नहीं बताया कि हाई रेजिस्टेंस क्यों है, आई डोंट नो हाई रेजिस्टेंस क्यों है। इफ द करंट सर्किट gets short circuited a large current fuse, then the fuse wire melts, agreed। The power through fuse is equal to the heat energy lost per unit area of the fuse, वो भी हमने पढ़ा था पिछली बार कि आई स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, हाँ। राइट। लेकिन ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि द हाई रेजिस्टेंस नहीं है, मेरे ख्याल से इट शुड बी हाई रेजिस्टिविटी, नो रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस हैज नो वैल्यू। ठीक है, आई थिंक लेट्स क्लोज दिस चैप्टर फॉर अ वाइल, खत्म कर देते हैं इसको, क्योंकि हमने ठीक है। काफी इसमें चैप्टर, मतलब वो टॉपिक्स कवर करे हैं, बल्ब का, पोटेंशियोमीटर भी कवर हो गया, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ भी हो गया। आप इस चैप्टर की तैयारी कर लो, एंड और ये देखो रीजनिंग असर्शन के क्वेश्चन दिख रहे हैं, ये हाँ, दिख रहा है। है ना, डू दीज, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के भी हैं। अच्छा। यू शुड बी नाउ accustomed to doing reasoning assertion, you should be able to do case study questions, केस स्टडी है, हम्म, एनसीईआरटी से उठाए हुए हैं कोई, दे आर नॉट एनीथिंग एबनॉर्मल, समझ गया। स्ट्रेट अवे है ना, तो पढ़ लो इनको, ये एनसीईआरटी से उठा रखा है। But now board is asking case study and board is asking the reasoning assertion also. So it's a very good source for you to study from. ठीक है। You can use it, and if you have any doubts, let's continue. किसी भी चैप्टर में पिछले में भी डाउट आता जाता है, प्लीज कीप टेलिंग मी, आई विल सेट अप अ क्लास, डिस्कस ओके। ऑल दोज टॉपिक्स जहाँ आपको लगता है आपको थोड़ा सा समझ नहीं आया। ठीक है। ठीक है जी, मिलते हैं फिर यस शाम सर। को, लेट्स डू